Good evening, everyone. Welcome to the today's webinar. It's a sector roundup on the EMS sector, that is electronics manufacturing services. Now, this sector has been in news in the recent past as well. काफी deals हुई है हाल ही में, काफी acquisitions हुए हैं. तो Dixon Technologies, Epack Durable, Amber Enterprises, सभी कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एक्विजिशंस कर रहे हैं. तो सेक्टर का क्या स्टेटस है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, एंड आगे जाके क्या डेवलपमेंट्स आएंगे, इसका हम आज एक अपडेट लेंगे इस वेबिनार में. We'll wait for a few minutes before we begin the session. We'll allow other participants to join in as well. Yeah, let's begin. Welcome everyone. Good evening. We'll focus on the EMS, that is the electronics manufacturing services sector today. The recent developments in the sector and what is the outlook going ahead. We'll discuss all these details. आज हम कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे rather than on the broad sector. And we'll go through six companies, what is their business model, what products do they manufacture, and क्या उनके आगे का आउटलुक है. तो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एक सेक्टर ओवरव्यू के साथ. तो इंडिया ईएमएस मार्केट FY25 में टोटल इंडस्ट्री का वैल्यू साइज है 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है. एंड ये आगे जाके नेक्स्ट 5 years में 30%, 32% केगर ग्रोथ जाके 15 लाख करोड़ जितना होगा, इसका एस्टिमेटेड है. अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज नाउ गेटिंग एवरीवेयर. सो वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, एवरीवेयर वी आर सीइंग मोर एंड मोर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन दी कार्स एज वेल एज इन दी टू व्हीलर्स. फैंस में अगर देखें तो BLDC फैंस आजकल बहुत डिमांड में है. तो अगेन ये BLDC फैंस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है अलॉन्ग विद द मोटर, एंड विच रिजल्ट्स इन द एनर्जी सेविंग्स. स्मार्ट मीटर्स, जो मीटर्स लगते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट, उसका भी अभी हम डिजिटाइजेशन देख रहे हैं. तो ओवरऑल जहाँ पे भी पहले एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता था, वहाँ पे सब जगह सेमीकंडक्टर चिप्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम देख रहे हैं. तो नेचुरली प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ जाता है. अगर आप देखें तो नॉर्मल कार विच सेल्स इन दी 10 to 15 लाख प्राइस बैंड, उसका EV वर्जन इज अराउंड 18 to 20 lakhs. तो ये सारा मेन जो वैल्यू इंक्रीज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट के वजह से है. इसका की ग्रोथ ड्राइवर इस सेक्टर का अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड 2020 से जब भी गवर्नमेंट ने काफ़ी PLI स्कीम्स लाई, तो इसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी था मोबाइल फ़ोन सेक्टर. तो जो मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट 70-80% पहले चाइना और ताइवान से इंपोर्ट होते थे,
तो नेचुरली कंपनीज लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन सब ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इंडिया में लगाई टू बेनिफिट फ्रॉम द पीएलआई स्कीम। लिस्टेड स्पेस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को काफी बेनिफिट हुआ। एंड हमने देखा है कि अनलिस्टेड स्पेस में एप्पल के सप्लायर्स फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन पेगाट्रॉन ने फैसिलिटीज लगाई। तो इसके चलते काफी स्मार्टफोन्स, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूरा यहाँ पे हो रहा है। इंडिया अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है इन मोबाइल फोन्स। सिमिलरली आईटी हार्डवेयर लैपटॉप्स में अब सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जैसे हमने मोबाइल फोन्स में देखा। एसीज एक दूसरा सक्सेस स्टोरी है। तो एसीज में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन लगाया ऑन कंप्लीटली बिल्ट एसीज। तो इसके चलते कंपोनेंट्स और पूरा एसी का असेंबली भी इंडिया में होने लगा। तो ऑलमोस्ट अभी 80-90% एसीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस में भी पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट अब देखे जा रहे हैं। तो इस तरह पीएलआई स्कीम्स एक की ग्रोथ ड्राइवर है। कंपनीज के मार्जिन्स भी इम्प्रूव किए हैं। एंड मेनली एक सब्सिडी के तौर पर कंपनीज को एनकरेज किया है टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। अगर हम देखें तो इवन लास्ट मंथ जून में एक्सपोर्ट्स, इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फ्लैट थे। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का खाली देखें तो देयर वाज 46% ग्रोथ। सो समवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर, जो ट्रेडिशनली टेक्सटाइल्स एंड फार्मा में जो पहले फोकस था, वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. There is another PLI scheme that has been announced, which is focusing on the electronic components. So all the components which go into the electronics, for that the government has come out with a large scheme, 23,000 crores, which will go on for the next 6 years. And companies are applying, and सितंबर के एंड तक, अक्टूबर में हम इसके भी विनर्स की लिस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा. सो अब नेक्स्ट फेज रहेगा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का, जो आगे जाके कंपनीज को मार्जिन बढ़ाने में मदद करेगा. अगर हम देखें तो चाइना, ये 22-23 का डेटा है. चाइना controls about 60% of the electronics market, and then again you have Taiwan and other East Asian countries like South Korea and Vietnam, which dominate the electronics manufacturing space. इंडिया का सिर्फ 2% शेयर है. तो इंक्रीमेंटल 1% शेयर भी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी पॉजिटिव रहेगा फॉर द कंट्री एज वेल एज द कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर. आते हैं टू दी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सीन. तो मोबाइल फोन्स डोमिनेट कर रहा है इस सेक्टर को. पीएलआई स्कीम भी उसी में काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी. एंड ऑलमोस्ट अभी 90% फोन्स इंडिया में बन रहे हैं. तो अराउंड 45% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मोबाइल फोन्स का है. दूसरे सेगमेंट्स में वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स भी अभी बढ़ के आएंगे. तो काफ़ी कंपनीज ने, जैसे एलजी, सैमसंग, डाइकिन इन दी एसी स्पेस, काफ़ी चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप कर रही है. तो इसके चलते डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इन सब सेक्टर्स में भी आगे जाके बढ़ेगा. कमिंग टू दी कंपनीज की बात करते हैं अब. तो जैसे मैंने कहा, वील फोकस मोर ऑन द कंपनीज टुडे. सो स्टार्टिंग विथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज. अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है. तो मोबाइल फोन्स एक मेन ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी का. पिछले साल भी 75% रेवेन्यू मोबाइल फोन से आया. एंड इसके काफ़ी क्लाइंट्स हैं. तो मोटरोला, नोकिया, सैमसंग, ये सब इसके ट्रेडिशनल क्लाइंट्स थे. शाओमी लास्ट 1 to 2 years में ऐड हुआ है. एंड काफ़ी छोटे ब्रांड्स जो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स है, जैसे आईटेल, टेक्नो. डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने लास्ट 1 year में ऑलमोस्ट 4 कंपनीज के साथ टाई अप किया है, जिनका एक वाइड ब्रांड पोर्टफोलियो है मोबाइल फोन्स में. तो इन सब के चलते हमने देखा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मोबाइल फोन्स ही एक मेन रेवेन्यू ड्राइवर रहा है. एलईडी टीवीज में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा. हाल ही में लास्ट 1-2 साल में
एलईडी टीवीज सेगमेंट में एक स्लाइड स्लो डाउन आया है एंड एलईडी टीवीज के प्राइस भी गिरे हैं, तो इसके चलते रेवेन्यू शेयर अराउंड 7% है। बट उसमें भी शाओमी, सैमसंग, हाइसेंस जो एक चाइनीज कंपनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांड्स को कंपनी ने ऑनबोर्ड किया है। वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स भी कंपनी एक्सपांड कर रहा है। रेफ्रिजरेटर्स भी लास्ट 1.5 ईयर में ऐड हुआ है एंड जैसे ये ऐड होता है तो एक कंपनी को मार्जिन ड्राइवर भी मिलेगा, बिकॉज कंपेयर टू मोबाइल फोन्स एंड एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स में मार्जिन रिलेटिवली बेटर रहेंगे। लाइटिंग भी एक मेजर सेगमेंट था, बट लाइटिंग में हमने अगेन देखा है कि एलईडी टेक्नोलॉजी के दाम ही काफ़ी घट गया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज एंड इसके चलते ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ लाइटिंग में आपको नहीं दिखेगा। बट अगेन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज अ मेजर manufacturer and supplier to all the leading LED light brands in India, like Philips. It has recently onboarded, and also companies like Havells and RR Cable. Coming to the other products and which will be the key growth drivers ahead. So telecom and networking, again, it manufactures the Wi-Fi routers, the router switches, and this is in JV with Bharti Airtel. So BTEL जो एक पॉपुलर ब्रांड है इन राउटर्स एंड स्विचेस, इसके साथ एक जेवी है। आईटी हार्डवेयर जो लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप पीसीज है, ये एक ऑलमोस्ट मोबाइल फोन के जितना लार्ज सेगमेंट बन सकता है आगे जाके। तो लास्ट ईयर तक सिर्फ लेनोवो इसका क्लाइंट था डिक्सन का, ये साल उसने एचपी, एसर और असूस को भी ऐड किया है। तो ये तीन एचपी, लेनोवो और एसर, ये तीन मेन कंपनीज हैं इन द लैपटॉप सेगमेंट। दे कंट्रोल बल्क ऑफ द मार्केट एंड इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा तो देयर विल बी ग्रेटर डिमांड ऑल्सो, एज प्राइसेस विल बी ऑन द लोअर साइड एंड the company will get benefits of economies of scale. Then again, wearables and hearables, that is your smart watches and the ear plugs, that is the total noise cancellation earphones which we use. That again is in a JV with BOAT, which is Imagine Marketing. And also company is now going into the small domestic appliances, which is your water purifiers, vacuum cleaners. So it has recently signed up Eureka Forbes as a client. तो रेवेन्यू मिक्स अगर FY25 का देखें तो 85% कम्स फ्रॉम मोबाइल एंड EMS, दैट इज योर IT हार्डवेयर, and the rest is contributed by the LED lights as well as washing machine and the refrigerator division. Last 1 year, there have been lot of developments in Dixon. So let's just summarize. So as I highlighted earlier, कंपनी ने 4 अलग ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है जिनका एक वाइड ब्रांड पोर्टफोलियो है। तो IS Smart टू इंडिया, लॉन्चीयर मोबाइल, वीवो इंडिया के साथ एक जेवी कंपनी करने वाला है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल्स। फिर एक अल्काटेल करके जो फ्रेंच स्मार्टफोन ब्रांड है, तो उसके साथ भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया है। IT हार्डवेयर में लैपटॉप्स में कंपनी ने 3 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए। इन्वेंटेक कॉरपोरेशन जो एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ भी चेन्नई में प्लांट सेटअप करने वाली है कंपनी। सो IT हार्डवेयर अगेन एक दूसरा ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है। लाइटिंग में कंपनी ने सिग्निफाई जो फिलिप्स ब्रांड के LED बल्ब्स बेचता है, उसके साथ एक 50-50 मैन्युफैक्चरिंग जेवी सेटअप किया है। तो लाइटिंग बिजनेस पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इन दिस जेवी and the company will then focus on manufacturing the lighting products. Basically Philips जो एक लीडर माना जा सकता है इन द लाइटिंग सेगमेंट, उसके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग जेवी, यानी कि 100% ऑफ द बिजनेस विल कम इन टू डिक्सन्स पोर्टफोलियो। स्मॉल अप्लायंसेज में अगेन यूरेका फोर्ब्स के साथ कंपनी ने टाई अप किया है
एंड आगे जाके अगर हम देखें तो द नेक्स्ट मार्जिन ड्राइवर जो रहेगा कंपनी के लिए वो रहेगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो अभी तक कंपनी मेनली असेंबल करता था सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करके, दे वुड असेंबल दी products, but now what they are doing is they are manufacturing these components as well, which will increase the margin. So any margin benefit like 3.5% margin, if it goes to 4.5, 5%, that growth in the EBITDA and the profit will be huge for the company. So it is setting up a JV with HKC Corporation, which is into assembly of display modules. The display modules are smartphone, TV एंड बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होते हैं। सो ये एक चेन्नई में प्लांट सेटअप करेगा जिससे डिस्प्ले मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करेगा। अगेन ये 2 दिन पहले ही 2 एक्विजिशंस किए हैं कंपनी ने। तो एक है दोनों चाइनीज कंपनीज है, एक है क्यूटेक इंडिया, इसमें 51% स्टेक लेगा कंपनी, एंड ये कैमरा एंड फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स बनाता है फॉर मोबाइल फोन्स। तो इसका बिजनेस भी दैट इज विल बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन वेर इन दीज मॉड्यूल्स विल बी यूज्ड इन द स्मार्टफोन्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगेन प्रिसिशन कंपोनेंट्स जो दूसरे माइनर कंपोनेंट्स है बट क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहते हैं फॉर लैपटॉप मोबाइल फोन्स, उसके लिए भी एक 74% जेबी सेटअप करेगा विद चोंगिंग यूहाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, which again is a Chinese company. So the benefit of the government allowing Chinese companies to compulsorily have a joint venture or alliance with a domestic manufacturer is benefiting Dixon Technologies. And ये last 2 acquisitions ये बता रहा है कि government focus रहेगा to have a majority partner that is an Indian company, and Chinese company का stake around 25% या 50% तक ही रहेगा इन द जॉइंट वेंचर्स। फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में। 55% रेवेन्यू ग्रोथ, 46% एबिटा ग्रोथ, तो हाई ग्रोथ सेक्टर रहा है, एंड इसमें भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक हाई ग्रोथ कंपनी रही है। मार्जिन्स अगर देखें तो मार्जिन्स एक टाइट बैंड में रहता है इन द 3.5 to 4% बैंड, एंड इसमें स्कोप टू इंक्रीज द मार्जिन्स इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज मोबाइल फोन्स में मार्जिन का प्रेशर बना रहता है। क्लाइंट भी द बेस्ट क्लाइंट को जो चीपेस्ट वे में एक्वायर कर जो सप्लाई कर सकता है क्लाइंट उसी के पास जाता है। तो देयर इज नॉट मच स्कोप टू इंक्रीज मार्जिन्स प्योरली ऑन द प्रोडक्ट फ्रंट। Profit again has grown at a rate of 60% for the company. रिटर्न रेशियोज की बात करें तो अगेन रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे रहे हैं, एंड इसमें भी जैसे जो हाई मार्जिन सेगमेंट एंड जिसमें देर इज ग्रेटर मार्जिन, वो जैसे शेयर बढ़ता है, जैसे FY25 में वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स का शेयर थोड़ा बढ़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो ये रिटर्न रेशियोज काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे फॉर द कंपनी। वर्किंग कैपिटल डेज अगेन बिकॉज ये मोबाइल फोन का सेगमेंट है तो देर इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज इन दी कंपनी, एंड कंपनी इफेक्टिवली वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं रहता है। कैश फ्लो अगेन ये कंपनी फ्री कैश फ्लो बनाती है बिकॉज वन थिंग इज कि वर्किंग कैपिटल में कम पैसा ब्लॉक होता है, तो दैट अगेन इज एन एडवांटेज फॉर द कंपनी। तो एक स्वॉट एनालिसिस अगर करें तो नेचुरली स्ट्रेंथ इसका मोबाइल सेगमेंट में रहा है, एंड ये कंपनी कंटिन्यूअस क्लाइंट्स एंड कंपनीज को ऐड करता है, एक्वायर करता है, जिससे हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50% कंसिस्टेंट ग्रोथ हर साल देते जा रही है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लेकिन मोबाइल फोन्स का मार्जिन कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, तो वो एक वीकनेस है, एंड कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो एनी मिस इन दी अर्निंग्स गोइंग अहेड, क्वार्टरली अर्निंग्स में अगर थोड़ा स्लाइट मिस है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस, तो एक स्टॉक में करेक्शन
शार्प करेक्शन आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज अगेन यही रहेगी कि मार्जिन्स बढ़ाए, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से एंड हाई मार्जिन सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर बढ़ा के मार्जिन्स बढ़ा सकती है कंपनी। एंड आईटी हार्डवेयर एंड होम अप्लायंस सेगमेंट मोबाइल फोन्स की तरह आगे जाके नेक्स्ट 5 साल में इन सेगमेंट्स में ग्रोथ आ सकता है। थ्रेड्स इसमें रहेगा कि कंपनी काफी चाइनीज कंपनीज के साथ बिजनेस पार्टनर बना के डील कर रही है, तो कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंडिया और चाइना के बीच में काफी टेंशंस रहता है। तो इसके चलते if there are any geopolitical developments, and if government says that you cannot deal with Chinese companies, there could be a big impact on the company's business. And also the PLI scheme is ending this year, that is in FY26. This is the last year. So unless government comes out with a PLI 2.0 for mobile phones, there will be some impact on the company's margin, but to mitigate that, company is going into backward integration. Starting next with Amber Enterprises. So next 3 to 4 companies are into the AC manufacturing basically. So Amber Enterprises manufactures ACs for all the key clients like Voltas, Havells, Blue Star, and it has been present in this segment for quite a long time. When it listed in around 2018 2019, it was just an AC manufacturer. Subsequently कंपनी को मतलब कंपनी ने एक्सपांड किया इनटू द कंपोनेंट्स। तो जो एसी कंपनीज रहती है, वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार, ये खुद भी एसीज बनाती है। एंड लास्ट 3-4 साल में कंपनीज ने उनका इंसोर्सिंग मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाया है। तो इसके चलते अंबर एंटरप्राइजेज ने डिसाइड किया कि लेट्स गो इनटू द कंपोनेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड बाय ऑल दीज कंपनीज। तो उसका ओवरऑल मार्केट शेयर बना रहा है एट अराउंड 28 to 30%। So except for compressor, which is a critical component and जिसका टेक्नोलॉजी अभी भी इंडिया में readily available नहीं है, except compressor, all the other AC components are provided by Amber Enterprises. तो heat exchanger, copper tubes जो ACs में रहते हैं, the fans, motors, सब Amber Enterprises provide कर सकता है। सिमिलरली उसने नॉन एसी कंपोनेंट्स, तो शीट मेटल, प्लास्टिक मोल्डिंग, तो इवन रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर अप्लायंसेस में भी लगता है। तो द कंपनी प्रोवाइड्स द नॉन एसी कंपोनेंट्स एज वेल। Then it has recently started last year, that is in FY25, it has recently started manufacturing washing machines on its own in a JV with Resojet. So again, this is an emerging business for the company, and company is looking to scale up this business going forward. And also the PCB assembly. Now, just to give a perspective on what is a PCB and a PCB assembly, basically printed circuit board. It is a green color board which is found inside all the electronics devices. And इस बोर्ड पे सभी कंपोनेंट्स, सभी चिप्स को बिठाया जाता है एंड सोल्डरिंग करके दैट बोर्ड इज द बेसिकली द ब्रेन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। And companies in India basically assemble the components which are imported from China, Taiwan, Korea, and other countries, and basically these components are assembled on the board. So this PCB assembly also Amber does for consumer durables. इसने start किया AC and other appliances से, and now it has expanded into the auto, IT, telecom, and even the defense sector now. And it has also now started manufacturing the boards itself. तो गवर्नमेंट का फोकस है कि PCBs जो ऑलमोस्ट 80-85% या उससे भी ज़्यादा अभी फिलहाल इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है लार्जली फ्रॉम चाइना। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग दीज इम्पोर्ट्स। ये जो कंपोनेंट PLI स्कीम है उसमें भी एनकरेजमेंट है टू सेटअप फैसिलिटीज फॉर द PCB बोर्ड्स। एंड इसके चलते अंबर एंटरप्राइजेज ने एक एक्विजिशन किया विच वाज एन इंडियन कंपनी, एसेंट सर्किट्स इन नियर बैंगलोर। एंड इसकी कैपेसिटी, सो इसकी फैसिलिटी एक ऑपरेटिंग फैसिलिटी थी।
So now almost 15% of this electronics revenue comes from the printed circuit board. And company has also signed up with Korea Circuits, which is again which will again be a joint venture, and they will set up a new greenfield manufacturing facility in India, and this will come under the component PLI scheme. So this PCB again, the board will be a backward integration for the company, and they will also look to sell to external customers. Another segment that the company is present is in the mobility segment. So it basically provides the ACs and the associated systems for railways, Vande Bharat coaches, metro coaches, buses, as well as now in the defense and data center segments. तो अंबर एंटरप्राइजेज ने टीटागढ़ रेल के साथ एक जेवी किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जो टीटागढ़ रेल को वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला है, उसमें अंबर एंटरप्राइजेज विल सेट अप द एचवैक सिस्टम्स, एसी सिस्टम्स, एंड ऑल्सो टीटागढ़ रेल का एक काफी अच्छा मेट्रो कोचेस का भी पोर्टफोलियो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने एक इटालियन कंपनी फिरेमा को भी एक्वायर किया है. तो उसमें भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी को एक बनते आ रही है. देन अगेन दूसरे कंपोनेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेलवेज में मॉडर्न ट्रेन्स में जाते हैं, तो डोर सिस्टम्स, द कंट्रोलर्स फॉर द डोर्स, पैंट्रीज, वो सब सेगमेंट्स में भी अब अंबर एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड दी अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो पेंटोग्राफ जो पावर जो खींचता है फ्रॉम द ओवरहेड वायर, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर विथ यूजिन मशीनरी सेटअप किया है, जिसका फैसिलिटी भी ये फर्स्ट हाफ FY26 में शुरू होगा. सो ओवरऑल एसी, रूम एसी से डिवर्सिफाई करते जा रहा है कंपनी. पहले ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू एसी से आता था, अब ये धीरे धीरे 70-60% आ रहा है. इवेंचुअली कंपनी ने प्लान किया है अराउंड 40% एसी से, एंड बाकी नॉन एसी सेगमेंट से रेवेन्यू आना चाहिए. तो कंपनी डिवर्सिफाई करते जा रहा है इनटू अदर सेगमेंट्स. लास्ट मंथ एक एक्विजिशन किया कंपनी ने इन दी पावर इक्विपमेंट स्पेस. कंपनी ने एक पावर वन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर किया है. ये कंपनी सोलर इन्वर्टर्स, बैकअप पावर बैकअप यूपीएस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो एक इमर्जिंग सेगमेंट है, ईवी चार्जर्स, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में कंपनी ने एक्सपांड किया है. ये सेकेंड हाफ FY26 एंड आगे जाके एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बनेगा फॉर अंबर एंटरप्राइजेस. So this is the revenue mix for the company in FY25. Consumer durables is 73%, largely driven by ACs. Then electronics forms 22%, which is your PCB assembly. And railway subsystems and defense still a small part, 5%. And going ahead, as the execution of the Vande Bharat trains picks up from the Titagarh rail side, it will benefit Ambar Enterprises as well, because it supplies a lot of these components. Historically, if you see, revenues have grown at a 20% CAGR. In unseasonal years when AC demand is low, revenue growth gets impacted, but otherwise that it has been a stable trend. Margins again have been on the low mid single digit side. But again, as the share of railways increases and the share of industrial and defense increases in the electronics segment, a company is aiming to get the margins on the higher side. Return ratios again, so whenever there is like FY25 was a good year for the entire AC industry, तो हमने देखा कि ROC अराउंड 15% तक पहुंची थी. वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नेट वर्किंग कैपिटल डेज. एंड कैश फ्लोज अगर देखें तो इट जनरेट्स operating cash flow which allows it to fund its capex, and also generates a bit of a free cash flow. So overall working capital requirements again are lower, and that benefits the company in terms of the cash flow. तो एक SWOT एनालिसिस करें तो अगेन 30% शेयर है ओवरऑल इंडियन एसी इंडस्ट्री का. दिस इज बोथ एसी और कंपोनेंट मिला के.
हाई मार्जिन रेलवे सिस्टम्स में कंपनी ने अच्छा डिवर्सिफाई किया है. वीकनेस अगेन सीजनलिटी फैक्टर. तो इस साल हमने देखा कि समर सीजन काफी मतलब हाई टेम्परेचर्स नहीं देखे गए कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो एसी डिमांड इम्पैक्ट हुआ है इस क्वार्टर में. Q1 के रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड आ सकते हैं, बट अगेन ओवरऑल अगर देखें तो एसी इंडस्ट्री भी ओवरऑल अभी सीजनलिटी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स. लेकिन इस सेगमेंट में भी कंपटीशन बहुत है. एंड अगेन कंपनी इज डिवर्सिफाइंग. एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एसीज में बन सकता है सिमिलर टू मोबाइल फोन्स. गवर्नमेंट भी उस पर फोकस कर रहा है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगेन द पीसीबी बोर्ड्स जो कंपनी बनाती है, तो देर विल बी बेनिफिट फ्रॉम द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. रेलवे एंड डिफेंस के ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन अगर डिले होता है तो ये रेवेन्यू ग्रोथ इम्पैक्ट करेगा. एंड एक ब्रॉड कंजम्पशन स्लो डाउन अगर आता है तो द एसी एंड वॉशिंग मशीन डिविजन्स कैन गेट इम्पैक्टेड. Coming to the other AC manufacturer, तो PG Electroplast again एक mainly AC manufacturer है similar to Amber Enterprises. एंड कंपनी ने वॉशिंग मशीन्स में भी एक्सपांड किया है. एयर कूलर्स भी कंपनी बनाती है. सो ओवरऑल इन दी कंज्यूमर अप्लायंस सेगमेंट में कंपनी प्रेजेंट है. एलईडी टीवीज कंपनी पहले खुद बनाती थी, फिर जॉइंट वेंचर सेटअप किया एक 1.5-2 साल पहले विद जाइना ग्रुप, wherein the TV manufacturing business was transferred to the JV called Goodworth Electronics. And PCB assembly company is going into backward integration. So it basically does the assembly of the boards which are used in the ACs. Plastic molding is a major component for PG Electroplast. It is used for both its in-house requirement as well as it sells externally to other consumer durables, sanitary ware, automobiles, and other consumer electronics as well. Similarly, tools भी company खुद बनाती है as well as it sells to the other companies. It has also signed up last year in September or in November with Spiro Mobility, which is into manufacturing electric scooters and lithium-ion batteries. Discussions are still underway as to when the manufacturing will start in India. But again, this will be a non-AC diversification moment for the company. And company also is has tied up with Highly, which is a Chinese company specializing in compressors, and which again will benefit PG Electroplast as these compressors will be used in the company's ACs. So it is putting up a capacity, a facility by investing 350 crores, and it should start by the end of this financial year. So again, that will be a margin driver for the company. So revenue mix, if you see the products, which is your AC, washing machine, TVs, it contributes to 72% of the revenues. Electronics, the PCB assembly is 7% of the revenues, and plastic molding and other segments, relatively low margin segments, contribute another 20%. Again, the company has seen strong growth because last few years have been good for the AC industry. So 50% CAGR revenue growth, 65% EBITDA growth, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं. एंड आगे जाके भी रिलेटिवली अगर एसी सेगमेंट में देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं. एंड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आगे जाके एक मार्जिन ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए. पैट में भी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है. Return ratios, again, working capital requirement is there, but the company has managed overall in terms of the working capital. Last year the working capital was higher because company को compressors and other components advance में company ने purchase किए थे due to this trade war and other uncertainties from China. But relatively company ने working capital भी अच्छा manage किया है. But again, in terms of the cash flows, because capex requirement has been higher, company is expanding its AC capacity, the free cash flow generation has not been there for the company, and that has
led to relatively, अगर बाकी एसी कंपनी से देखें तो कैश प्रोफाइल वीक है. Strengths again are diversified client base and backward integration. Opportunities again AC exports जैसे मैंने पहले बताया, and diversification into the non AC segment. Coming to the fourth company and third in the AC segment, that is Epack Durable. So this company again is a manufacturer of ACs for all the leading brands, and the additional revenue segment for this company is small domestic appliances. So all your induction cooktops, water dispensers, mixer grinders, a company manufactures, has recently added air fryers, and this year it will add new products like infrared cooktop, blenders, coffee makers. अब इस सेगमेंट में अगर देखें स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, तो ये एक ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं रहा है ट्रेडिशनली, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे. लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पास किए हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अब आगे जाके पिकअप करेगा. तो चाइना से जो इंपोर्ट होता है उस पर स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स लगने वाले हैं, जिसके चलते ये न्यू प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च किया है उसके लिए देयर विल बी ग्रेटर डिमांड फ्रॉम कंपनीज. And large domestic appliances also the company has expanded. So air coolers and washing machines is what the company has launched. Again, it's a backward integrated player, तो सभी components except for the compressors company बनाती है, and it uses it for its own manufacturing. कंपनी ने पैनासोनिक और डाइकिन जो टू मेजर एसी कंपनीज है उसके साथ भी पार्टनरशिप की है फॉर द कंपोनेंट्स. एंड मोटर्स में कंपनी ने एक जेबी सेटअप किया है विद राम रत्न वायर्स विच इज इपैवो इलेक्ट्रिकल्स, जो नॉर्मल मोटर्स एंड बीएलडीसी मोटर्स दोनों बनाती है. इसमें भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, तो दीज मोटर्स गेट यूज्ड बोथ इन फैंस एज वेल एज एसीज. So revenue again 72% comes from AC. Company is focusing on reducing it by adding to the share of small domestic appliances, which again come with good margins, as well as large domestic appliances. Again, the growth here has been good with consistent 20-25% growth, and operating leverage has translated into EBITDA growth. Margins relatively similar to Amber Enterprises, and earnings have grown at 94% CAGR. Working capital days again also the company has maintained, as well as the cash flow metrics. So SWOT analysis again, the main threat is that the company has tied up with Hisense, which is again a Chinese entity, which will be a key growth driver going ahead, unless geopolitical tensions again increase between India and China, and there are bans on Chinese companies, then that revenue segment could get impacted. But otherwise, opportunities again, quality control orders to improve the prospects of these companies. Coming now to the two companies, so Syrma SGS and Kaynes Technologies. These companies basically cater to the B2B segment, business to business segment. ये कंपनी PCB assembly provide करती है to the manufacturers of electronics. So पहले की चार कंपनीज थी वो लार्जली B2C सेगमेंट में थी, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करती थी. लेकिन सिरमा एंड केन्स फोकस मोर ऑन द इंडस्ट्रियल, रेलवे, ऑटोमोटिव साइड, एंड दे बेसिकली प्रोवाइड द PCB assembly for all these electronics. So Syrma SGS is present across consumer, industrial, automotive, healthcare, medical devices, IT, and railways. These businesses are higher margin than the consumer electronics, require higher working capital. एंड पीसीबी असेंबली कर रही है कंपनी, तो अब आगे जाके जैसे गवर्नमेंट पीसीबी एंड कंपोनेंट्स को एनकरेज कर रहा है, तो जस्ट 2 days बैक
कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है विद कोरियन कंपनी कॉल्ड शिन्यूप इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जॉइंट वेंचर बनाएगा. दे विल सेट अप अ फैसिलिटी अबाउट 3,000 crore capex will be there. But again, the government is supporting through a subsidy, so the net capex is lower than the actual capex. रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंज्यूमर जो एक लो मार्जिन रहता है वो 36% है इन FY25. इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव द हायर मार्जिन सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट 28 and 22%, and then healthcare and IT are relatively lower contribution. एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी प्रेजेंट है. लास्ट 2 साल में एक्सपोर्ट शेयर कम हुआ है बिकॉज द ग्लोबल सिचुएशन हैज नॉट बीन गुड एंड कंपनी हैज बीन फोकसिंग ऑन द डोमेस्टिक मार्केट. बट ओवरऑल ऑर्डर बुक में भी एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर्स अच्छे हैं एंड नेक्स्ट 1-2 साल में कंट्रीब्यूट करने चाहिए. Financials देखें तो it has been a bit on the lower side, but that's again because a high margin export segment has not done well. Coming to the working capital, so again, if you see inventory days, debtor days, these are on the higher side because they require that much higher amount of working capital, and that relatively impacts the return ratios, but still have been maintained above in the 10 to 12% band. And because you require more the working capital, so free cash flow generation has been bit of an issue for the company. Coming to the SWOT analysis, so again, management focuses on profitable growth. So the revenue growth may not be higher, but again, the profitable growth is what the management focuses on. Weakness is a higher working capital requirement, which leads to suppressed ratios, return ratios, and capex intensity has been on the higher side. But China plus one is a big opportunity for the company, and backward integration आगे जाके जो कंपनी करेगी. इसमें थ्रेट रह सकता है कि कंपनीज आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन पीसीबी असेंबली सिस्टम्स बीइंग पुट अप एट देयर ओन प्लांट्स, so that could impact the company's business. Coming to Kaynes Technology, so again similar business profile compared to as compared to Syrma SGS. It provides the PCB assembly across the segments, so auto, industrial, EV, railway, medical, aerospace. But company has done relatively well to Syrma SGS, and PCB assembly. Again, the company is also focusing on backward integration. So PCB, it is setting up a capacity which will start in this year. Semiconductor, it has entered, so OSAT, that is outsourced semiconductor assembly and testing. Again, this facility will start this year. Both these businesses will have a higher export share, so it will benefit the company in terms of higher exports as well. Revenue mix, again, industrial gives 55% revenue, so which is a higher margin business, and 26% comes from the automotive segment. Export mix, again, because of the global slowdown, has been on the lower side, but going ahead, the order book is increasing. कंपनी ने एक कंपनी एक्वायर किया ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले साल में, जो यूएस एंड कनाडा में जिसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है. तो इसके चलते द इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू भी आगे जाएगा, बढ़ के आएगा. कंपनी का ग्रोथ हैज बीन हायर देन इट्स पीयर्स, and even the margin has been strong at about 15%. So last year, because of this semiconductor and the PCB capex, the capex was on the higher side, which led to negative cash flow, because last 1 to 2 years the company has been expanding quite rapidly. So SWOT analysis again on this company similar to Syrma SGS, but higher margin profile than Syrma, and diversified segment revenue mix.
So when we conclude looking at the valuations, again, this entire EMS sector trades at higher valuations. The growth also has been higher in this segment. So in terms of the preference, we are and continue to remain positive on Syrma SGS, Amber Enterprises, PG Electroplast, and Epack Durable. Looking at their growth prospects and the relatively cheaper valuations, we remain constructive on these companies. While Dixon and Kaynes Technology, the growth parameters, the growth prospects are there. But again, if the companies, the valuations are such that if the companies don't deliver that growth on a quarterly basis, we could see sharp corrections and which could impact the overall returns. So that's it on the webinar today in terms of the information. We'll move on to the Q&A session. Request everyone to place their questions in the comment box, and we will stay on the EMS side as the topic was on EMS. So if there are any questions on the EMS sector, request participants to post it in the comments box. Yeah, so there is one question on in terms of the valuations. So if you look valuation wise, on a 26 and 27 basis, if you see, Syrma SGS is among the cheapest. Also Epack Durable, wherever the growth has lagged a bit, there the valuations are comfortable. And going ahead, both these companies, Syrma SGS and Epack Durable, are expected to post higher growth along with improvement in margins. Syrma SGS again is focusing on the higher margin industrial and the auto segment, reducing its focus on the consumer segment. So what happened was, last 2 3 years they focused more on the consumer segment, the set top boxes and the other consumer equipment, which gave them the revenue growth, but again margins were a bit subdued because of that. So the company has now switched over to getting greater orders from the higher margin industrial, automotive, healthcare segment. And if the share of exports, the current order book has a good export share, and the company is confident that if that gets translated into the revenue, that will come with the higher margins. So yes, Syrma and Epack both come with decent valuations. Amber Enterprises also, with the kind of growth that is projected, again the valuations are on the comfortable side. And in terms of return ratios, again return ratios have been higher for Kaynes as well as Amber Enterprises. And the companies which maintain their working capital within range, and overall uh, have a good capital allocation, return ratios will naturally be better for them. There's another question from Tatva Investments on what impact can anti-China sentiments have on Kaynes Technology. So, anti-China sentiments can only benefit the company, Kaynes Technology, and is actually benefiting, because if you see, all the companies are benefiting from not just anti-China sentiments, but there has been a shift to
the sourcing of components and products from India. So both foreign companies as well as domestic companies have realized in the last 5 years. हमने COVID देखा. There was recently again there are issues with the rare earth magnets. China is not supplying. So companies have seen that China at the if they decide tomorrow they can totally stop sending these components. So there needs to be domestic capacity available in India to manufacture these products. The government is supporting, companies have realized, so they are also putting up capacities. So it can only benefit the Indian EMS sector. Another question from Mr. Sanjay Arora on in September, which companies can benefit from PLI 2? सो अगर हम सिर्फ अभी की जो एप्लीकेशंस आई है, जो कंपनीज ने अप्लाई किया है विद द गवर्नमेंट, so the beneficiaries will be Ambar Enterprises, Kaynes Technology, Syrma SGS. तो सभी कंपनीज ने रिसेंटली साइन अप किया है विद टेक्नोलॉजी पार्टनर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक मेजर कंपोनेंट रहेगा इन द कंपोनेंट पीएलआई स्कीम. फिर कैमरा मॉड्यूल्स जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने डिसाइड किया है. तो जो भी कंपनीज अभी जो मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, तो कंपनीज आर फोकसिंग ऑन दैट सेगमेंट and accordingly they are applying for these schemes. So it will benefit these set of companies who will apply under the component PLI scheme, and the benefit will be seen not immediately. एक दो साल में जैसे कंपनीज कैपेसिटी सेटअप करती है, तो ये रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा फ्रॉम FY 27-28 ऑनवर्ड्स, जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहेगा. एंड आगे जाके जो इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल सब्सिडीज भी कंपनीज को रिटर्न में मिलेगा. तो that will benefit more from FY 27 and even 28, I would say. So long term benefits will be there for these companies. Any other questions on EMS? So we can take in for another 5 to 10 minutes. Any other questions? Kindly post it in the comments box. Yeah, so as there are no further questions, we'll conclude this webinar. Thank you all for listening, and thank you for participating. We'll keep coming out with more such webinars. There's one on defense sector next week, so kindly tune into that as well. And thank you everyone for attending. The EMS sector overall remains a high growth sector. So focus on medium to long term investments to generate meaningful returns. Thank you. Have a nice evening.